गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मई जून 2019 वेरिएंस 22. Methyl propane is an isomer of butane. Explain why methyl propane and butane are pairs of isomers. So आप बता सकते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट. ठीक है, तो अब लिखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. Identify the types of isomerism shown by methyl propane and butane. तो जाहिर सी बात है, आप नोट करें ये स्ट्रेट चेन एल्केन है और ये ब्रांच चेन एल्केन है. इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है क्योंकि अल्काइल ब्रांच फॉर्म हो गई है. When a sample of butane is heated to 373 Kelvin in the presence of a catalyst and allowed to reach equilibrium, the following reaction occurs. Delta H की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. State and explain the effect of composition of this equilibrium mixture when the temperature is increased to 473 Kelvin. तो अगर किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाएगी. So if we increase the temperature, equilibrium favors towards left hand side, hence yield of product decreases. इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे 1 mole of butane gas was added to 1 dm³ closed contained system at constant temperature and pressure. The amount of butane and methyl propane was measured at regular time intervals. Okay. Label the graph with a T to show the time taken to reach dynamic equilibrium. Okay. So बेटा ये वो T है जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को रीच कर लेगा. ठीक है. इसके बाद आपसे कहते हैं use the graph to find the concentration of butane and methyl propane in the mixture at equilibrium. Okay. आप नोट करें ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट का स्केच क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रही होगी, और ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट का स्केच क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा होगा. सही है. जब रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम के ऊपर उसका अमाउंट कितना हो गया 0.3 मोल, और ये मोल कितने डीएम³ में 1 डीएम³ में. इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम ब्यूटेन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.3 मोल पर डीएम³. सिमिलरली
ये जो इक्विलिब्रियम है ये किस अमाउंट के ऊपर रीच किया है 0.7 और 0.7 मोल्स जो है वो 1 डीएम क्यूब में है इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.7 मोल पर डीएम क्यूब राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर दिस रिएक्शन तो केसी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट आपके पास कौन सा है मिथाइल प्रोपेन ठीक है ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या है आपके पास ब्यूटेन ठीक है जनाब ये लिखा हुआ ये रिएक्टेंट था आपका ये प्रोडक्ट था आपका इसको उठा के लिख दिया हमने कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द केसी स्टेट द यूनिट्स कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल प्रोपेन कितनी है 0.7 कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन कितना है 0.3 तो आपके पास 0.3 डिवाइड बाय सॉरी 0.7 डिवाइड बाय 0.3 कितना होगा 0.7 डिवाइड बाय 0.3 इट्स गोइंग टू बी 2.33 सही आप जानते हैं कि इसकी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब इसकी भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ये दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल होंगी व्हिच इज व्हाई यूनिट नहीं होगी ना ठीक ग्रुप 17 एलिमेंट्स are commonly referred to the halogens. State and explain the trend in the volatility of fluorine, bromine, and iodine down the group. Down the group, number of electrons increase होते हैं, strength of van der Waals forces increase होती हैं, volatility decrease होती है. Down the group, number of electrons increases. This increases the strength of van der Waals forces. Hence, volatility decreases. Hydrogen gas reacts with different halogens under different conditions. State the conditions required for chlorine to react with hydrogen at room conditions. तो जब क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है हमने आपको बताया सनलाइट लिख दीजिए आप सनलाइट नहीं लिख सकते आप इसकी जगह पे यूवी लाइट भी लिख सकते हैं ठीक है On heating, iodine reacts with hydrogen in a reversible reaction. Give the equation for this reaction include state symbols. Equation चाहिए, state symbols चाहिए. तो ये हो जाएगा आपके पास hydrogen gas reacting with iodine gas converting into 2 hydrogen iodide gas. ठीक है hydrogen chloride reacts with water. One of the reactant behaves as a bronzed acid. What is meant by the term bronzed acid? Proton donors are called bronzed acids. Identify the reactants behaving as an acid and its conjugate base. Obviously, अगर इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है तो ये एसिड है और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है Name the type of bond formed between H2O and hydrogen ion to make H3O plus.
So whenever electron rich and electron deficient react together, dative bonding is formed. Dative bonding बोलें या coordinate covalent bonding बोलें, doesn't make any difference. For H3O plus, predict its shape and the HOH bond angle. So H3O plus में shape होगी just like ammonia, trigonal pyramidal. Angle is going to be 107 degree. ऐसा क्यों हुआ? हम एक काम करते हैं, हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6. आप सब जानते हैं कि प्लस चार्ज है ऑक्सीजन पे. दैट मींस ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, व्हिच मींस ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. नाउ in this situation we have 3 single bond and a 1 lone pair. So whenever we have 3 single bond and a 1 lone pair, hybridization is going to be sp3 with 107 degree angle and trigonal pyramidal shape, just like ammonia molecule. I hope it makes sense to you because we have done such things in the class. Period 3 elements react with chlorine gas to form chlorides. The table shows the differences in observations which occurs when period 3 chlorides are added to water. ठीक है. Write an equation for the reaction occurring when SiCl4 is added to cold water, include state symbols. So basically आपसे equation मांग रहे हैं और state symbols मांग रहे हैं. तो हमने आपको बताया है कि when SiCl4 is treated with water, it will turn to 4HCl plus SiO2. और हमने आपको ये भी कहा पढ़ाते हुए कि SiCl4 is a colorless liquid at room temperature pressure. वाटर भी लिक्विड है, इसके मिस्टी फ्यूम्स बनते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा ये एक्वस या गैस दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं. और ये बेटा सॉलिड बनेगा आपके पास क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं, राइट. Name the type of reaction occurring when SiCl4 is added to water. Ignore the exothermic endothermic nature of the reaction. It's basically hydrolysis because of the presence of vacant d orbital. ये रीजन दी थी हमने क्लास में. Explain in terms of bonding why NaCl and SiCl4 behave differently when added to water. तो आप इसमें सिंपल ये बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड is an ionic compound. Sodium chloride is an ionic compound. So it is soluble in water. SiCl4 a simple covalent molecule. So due to the vacant d orbital, it can easily hydrolyze with water. Explain in terms of electron negativity why bonding in HCl is different from the bonding in SiCl4. NaCl में bonding इसलिए different है क्योंकि electron negativity का difference ज़्यादा है. तो आप बताइए कि सोडियम क्लोराइड is formed because
of the loss of electron and gain of electron. Sodium lose करेगा, chlorine gain करेगा, तो loss and gain of electron takes place. Also, its electron negativity value is greater than 2. ठीक है, जबकि SiCl4 कोवलेंट होता है because of the sharing of electron. So because of the sharing of electron, SiCl4 is covalent, so its electron negativity value is less than 2.0. Chlorine dissolves in cold water and reacts with it. Identify the oxidation number of chlorine in each chlorine containing species in this reaction. तो क्लोरीन न्यूट्रल है बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, HCl में -1 होता है और HClO में +1 होता है. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग. मैंने आपको बताया था कि जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl और क्लोरिक 1 एसिड फॉर्म करता है, इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं. Explain why chlorine is used in the purification of water. क्लोरीन को क्यों हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली उसकी रीजन बहुत सिंपल सी है. बिकॉज क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. So it can kill bacteria and germs. A mixture of HCl and HClO is added to cold dilute NaOH. One of the products behaves as a bleach. Suggest the equation for this reaction. बेटा ये है आपके पास NaOH. फिर वो रिएक्शन करवा रहे हैं आपको HCl के साथ और HClO के साथ, और वो कह रहे हैं कि जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ब्लीच बनता है. ब्लीच का फॉर्मूला होता है NaClO सोडियम क्लोराइड 1. What's left now? Water. ये वाटर आ गया. सही है. 2 क्लोरीन है, तो ये बनेगा बेटा आपके पास प्लस NaCl ठीक है. 2 chlorine 2 sodium. How many hydrogen atoms now? 2 and 2 4, so put 2 here. Question number 4. There are many different types of aliphatic and aromatic hydrocarbons. Name a naturally occurring source of aliphatic and aromatic hydrocarbons and outline
how different hydrocarbons are separated from this source. Name of source, obviously crude oil. Outline of separation of hydrocarbons, तो जाहिर सी बात है fractional distillation. और fractional distillation क्यों यूज करते हैं? Because different fractions have different boiling points. Okay, when alkanes are heated to high temperature in the absence of air, the molecules can break into smaller molecules. Identify the type of reaction occurring. So long chain alkanes convert होते हैं short chain hydrocarbons में. The process का नाम is cracking. Write an equation which describes the reaction occurring when heptane C7H16 is heated in the absence of air to form hexane, butane, and ethene only. तो C7H16 है, hexane, butane, hexane is C6H14 plus butane is C4H10 and ethene is C2H4. So 6, 4, 10, 10 plus 2, 12. तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो 14 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 कर देते हैं, सही है? तो 6 plus 4, 10, 10 plus 4, 14. यहाँ पर कार्बन 14, यहाँ पर हाइड्रोजन 32, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो 32 हो रहे हैं. The equation for the complete combustion of ethene is shown. Calculate the volume in dm cube of carbon dioxide formed in the complete combustion of 1 gram of ethene at room temperature and pressure. तो बेटा हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये है आपके पास मोल्स ऑफ इथीन. तो आप 1 को डिवाइड कर दीजिए इथीन के एमआर से, विच इज 28. 1 डिवाइडेड बाय 28, सो ये हो जाएगा 0.0357 मोल्स. आप जानते हैं इक्वेशन में इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान रेशो 1:2 का है. अगर आपने 0.0357 कैलकुलेट किया है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे आपके पास? 0.0714 मोल्स. ठीक है, आप सब जानते हैं कि 1 मोल of carbon dioxide equals to 24 dm cube volume at RT. तो अगर आपके पास 0.0714 मोल्स हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? इसको मैं 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.714. ठीक है जनाब, ये आपका वॉल्यूम हो गया. डी पार्ट, the table compares the reactivity of alkane and alkene with chlorine. alkane में substitution होता है, addition and substitution.
या free radical या electrophile and free radical. During the first stage in the substitution reaction, chlorine forms chlorine free radical. Explain what is meant by the term free radical. Species having odd electron, single unpaired electron, ठीक है. Name and explain the type of bond breaking which occurs to form chlorine free radicals. Homolytic fission, और homolytic fission में क्या होता है? Equal sharing of electron takes place. Name the stage of the reaction mechanism which occurs when methane molecules react with chlorine free radical. Propagation, complete the equation for the reaction which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine free radical. तो ये बनेगा आपके पास HCl और ये बनेगा CH3 radical. Carbon atoms can form sigma and pi bond within hydrocarbon molecules. ठीक है. Explain the following statement with reference to sigma and pi bond. Alkenes react with electrophiles, but alkanes cannot. तो आप बताइए, alkanes only exist sigma bonds. Only contains sigma bonds, while alkene contain both sigma and pi bond. ठीक है. Electrophiles are positively charged species. So they are electron deficient. Having positive charge. So electrons of pi bonds can react with them. Can react with electrophile. ठीक है ना. Many naturally occurring esters are used as food flavoring. The structure of ester V is shown. Name V. Guys, 1, 2, 3. इसको कहते हैं propyl. And this entire thing is ethanoate. तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा propyl ethanoate. V reacts with the reagent to form a salt of a carboxylic acid and an alcohol. Identify a reagent that could be used in this reaction. बेटा तो आपको पता है जब salt of carboxylic acid और alcohol बनता है तो इसका मतलब alkaline hydrolysis हो रही है. तो NaOH in water
Draw the displayed formulae of the alcohol made during this reaction. Propanol, displayed करें इसलिए सारे के सारे bonds और atoms को show करना होगा. State one other possible use for V apart from as a food flavoring. Beta used in perfumes, lotions में भी इस्तेमाल होता है और as a solvent भी इस्तेमाल होता है. Ester W is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Calculate the empirical formula of W. So बेटा कार्बन है आपके पास, हाइड्रोजन है आपके पास, ऑक्सीजन है. ये है 54.5%, डिवाइड करो 12 से. ये है 9.1, डिवाइड करो 1 से. ये है 36.4, डिवाइड करो 16 से. तो जब आप इसको यूज करेंगे तो 54.2 divided by 12, it's going to be 4.51. ये 9.1, 36.4 divided by 16. तो ये हो जाएगा 2.275. 2.275 को आप डिवाइड कर दीजिए तमाम वैल्यू से. तो 4.51 डिवाइडेड बाय आंसर, ये हो जाएगा 1.98. फिर होगा 9.1 डिवाइडेड बाय 2.75, ये हो जाएगा आपके पास 0.043. और फिर है आपके पास 1. ठीक है जनाब. तो अब आपने इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है. Oh my goodness, 9.1. ओ एक मिनट बेटा, कैलकुलेटर नहीं चल रहा, ये वैल्यू गलत आई है. इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लूं. 9.1 डिवाइडेड बाय 2.275, ये 4 आ रहा है बेटा. सो इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, O हो जाएगा. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा आपके पास. स्टेट व्हाट अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन is required to determine the molecular formula of W. भाई molecular formula determine करने के लिए we should know molecular mass. Compound X, Y, and Z are shown. They all have the same molecular formula. Deduce the molecular formula X, Y, and Z. तो बेटा ये हो जाएगा 1, 2, 3, 6 O2, taken 3, 5, 6, and 2 oxygen. In 3 experiments, sodium is added to separate sample of X, Y, and Z. Complete the table to show the observations for each of these 3 experiments. Ignore any temperature changes which may occur. Sodium and X, no reaction. Sodium and Y, bubbles of gas. क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं. एस्टर, नो रिएक्शन.
Sodium carbonate solution reacts with methanoic acid. Write an equation for this. یہ methanoic acid ہو گیا, یہ sodium carbonate کا solution ہو گیا, یہ کنورٹ ہوگا سوڈیم میتھانوئٹ میں, اور کیونکہ سوڈیم کے 2 مولز ہیں اس لیے میتھانوئٹ بھی 2 لیا ہے میں نے. یہ سوڈیم میتھانوئٹ ہوا, یہ واٹر ہوا, اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ. صحیح ہے جناب. So we are done with this paper.